बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे जो वॉवेल्स हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ ये जो वॉवेल्स है वो प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक हम आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। आपको ज्यादातर ए, ई, आई, ओ, यू उसके आगे लगा सकते हैं, लेकिन उसका आपको पहले प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग। चलो देखते हैं। ए एप्पल, सो हियर आंसर विल कम एन। बैट, इट इज अ कॉन्सोनेंट, अ बैट। कैट, a cat. Egg, that means e, it is a vowels, so our answer is n. Got, g, that means consonant, a got. Hen, h, hen, here will come a. Honest, here h, here h, but here H is silent, यहां पे H silent है, इसीलिए उसका प्रोनाउंसिएशन होता है honest, ओ। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ओ, it is a स्वर, means vowels, so here will come N. R, that means here also will come N. Ice, I, that means it is a vowels. N. MBBS, M it is a consonant, but pronunciation MBBS. M, A, it is a vowels. So here we can use front of MBBS and unity, U, it is a vowels, but here Y, it is a consonant, so we can use here a unity. Umbrella, U, but here umbrella, here we are using it is a swar. Umbrella, that means N. A kite, O, orange, O, it is a vowels. And one, here means V, here you are observing it is a consonant, so here will come A. So in this way you will use A or N in front of the consonant and vowels according to the pronunciation. So I hope that you can understand very well when we will use article A or N. Now we will discuss about the, that means it is a definite. We can use in singular as well as plural and non-count. So we will discuss some rules related to the. Let's see. Okay, let's start. Understand about article the. It is a definite. Okay, in singular, plural and non-count. At the time we are using the. तो चलो पहला रूल हम देखते हैं the. Name of the countries. Front of the name of the countries we will put the, but in some condition. कौन सी condition है? Some countries are preceded by the, especially the. Usually if the name is plural, not a singular, the country's name is plural, at the time we can use the. Then plural, contain
एंड एडजेक्टिव्स और इंक्लूड्स ऑफ। जैसे कि लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हियर यूजिंग ऑफ, and so we can write here the United States of America. Soviet Union, many countries that we can use here the Soviet Union, but here we cannot use the India. India, it is a singular, one country, so we cannot put here the, it is a wrong. So it is a first rule to use the. Okay, second rules of article the name of the rivers, name of the oceans, name of the seas, group of mountains, holy books and islands, we can use the. So once again, name of the rivers, ocean, seas, group of the mountains, holy books, islands. So at the time we can use article the. It is the name of the Atlantic, it is a name of the ocean, no? That means we can use the Atlantic. It is the name of the river, the Ganga, mountain, the Himalayas, holy book, the Ramayana, and sea, Mediterranean Sea. So in this way we can use the article the. It is a second rule. Now we will discuss third rule. Okay, we will understand the rule number 3. Ordinal numbers use the. It is the third rules. Ordinal numbers जैसे कि first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, front of this number we can use the. जैसे कि let's solve some example. The Second World War, the first chapter, the sixth channel. So in ordinary means ordinal numbers we can use the. Next rules, name of the school and colleges, but some limitation. When a school has of in its title, at the time we can use the. Means the University of London, the university, the school of Anjar, the school of Anjar, the University of London, at the time we can use the. And main rule, unique object, at the time front of the unique object we can use the, like the sun, the earth, the universe. So in this way it is a fifth rules of the. Now we will discuss next number rules. Let's understand the sixth rules. Part of a large group, part of the large group, at the time we can use the. One of the students, one of the best students, what of the. So कोई भी पार्ट, बड़े में से छोटा पार्ट आपको बताना है तो तब हम द यूज कर सकते हैं। और जब हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल का जब टेबल देखा तब हमने सिंगुलर में बताया गया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, उसमें हम कैसे द यूज करते हैं। आर्टिकल ए और एन आपको पता चल गया, कॉन्सोनेंट वोवेल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन द कैसे यूज किया जाता है, यहां पे देखिए, ही रिक्वेस्टेड अ पपी
for his birthday. बराबर, he requested a puppy. So in this singular again we will tell about it. At the time he wanted, it is a definite, the puppy he played with at the pet shop. So here we can use a article a, and then again at the time we can use the, it is a definite. सेम वही पपी जो भी है, डेफिनेट जो भी है, इसीलिए हम यहाँ पे द यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड राइट दिस एग्जांपल. Okay, so definite article the. Here 8 number rules. Plural count nouns. Plural. In a 7th number, that is singular. Okay, a puppy. And then again, this statement repeat. At the time we can use, it is a definite. So we have used the. So here plural count nouns come and look at the children. Children, it is a plural and definite. Here the flowers in her garden are beautiful. उसके गार्डन के जो फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल है. दैट मीन्स डेफिनेट, एंड फ्लावर्स वो प्लूरल है. सो द फ्लावर, इसलिए यहां पे द यूज किया जाता है प्लूरल में. और लास्ट रूल्स, नॉन काउंट नाउन्स, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स में भी हम डेफिनेटली द लगा सकते हैं. हैव यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका? हमने यहां पे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री कितना लर्न किया है. दैट मीन्स इट इज अ अनकाउंटेबल. सो एट द टाइम वी कैन यूज द. तो आपको अच्छी तरह से आर्टिकल समझ में आ गया होगा, कब हम ए यूज करते हैं, कब हम एन यूज करते हैं और कब हम द यूज करते हैं. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, and to watch more videos related to the grammar, so please subscribe my channel. Thank you.